Hello guys, welcome back to channel of VT Coaching. So today I am posting the last video of the playlist of trigonometry. I am solving all the PYQs, and as you can know that PYQs are very important for any kind of preparation for the board exam. So this video will be having almost 10 years PYQ for you to practice. Check the video and start preparing the PYQs from these videos for the unit of trigonometry. Now this unit, as you have known, I'll post one more video for the height and distance later on. और अभी इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, जो कम से कम पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करवाएंगे. So I'm starting from the year 2023. I'll go back in that order, 22 and 21 and so on. नोटबुक लेकर बैठिए, क्वेश्चन को नोट करिए, इसके ऊपर हेडिंग लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. प्रिपरेशन को अपने एक जगह पर रखिए, डोंट मिक्स अप द वर्क. एंटायर ट्रिगोनोमेट्री शुड बी एट वन प्लेस, तभी आपको एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन होगी आपकी. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. लेट अस start with the questions from here onward. The first question is from year 2023. It is a multiple choice question. As you can see, we got 4 options given to us. We have to take one option. Now, board does not ask you for the solution in these questions. It only asks you for the answer, the chosen answer. आपको सिर्फ टिक करना है अपना ऑप्शन के ऊपर. आपको अपनी कॉपी में सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है. I hope you understand this point. So sometime बच्चे पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, पूरा एक पेज निकाल लेते हैं सॉल्यूशन करने के लिए. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सॉल्यूशंस नहीं दिखाने होते हैं. आपको सिर्फ क्या दिखाना है, आपको सिर्फ ऑप्शन पर टिक करना है. It might be option B or might be option A, whatever. Just write question number 1, option number B, if you get the answer B. So let us start this question. So I've got 1 plus sine A into 1 minus sine A, and that is giving me, and they are asking us what it is equals to all about. Let us see what is the answer can be. So I've got a question here. As you can see, it is basically as it is A plus B So I've got 1 plus sine A into 1 minus sine A. That gives me 1 minus sine square A. That also gives me cos square A. So I can tell you these questions are being solved for ICSE 24 exam. We are preparing for 24 maths exam of ICSE board. Those all who are in the process of preparing for the exams of board exams of 24 ICSE board, you can always use my videos for maths. I will keep on posting every unit in one playlist one by one. I have posted for geometry earlier, and on finishing up on the line of finishing up the trigonometry unit. I will start up next, I guess, mensuration or something like that, or trigonometry or geometry something. Anyway, so I got 1 minus sine square A. The INT is equals to cos square A. Option number D is correct in that manner. I hope you understand this. This is a question where I am using an INT of A plus B and A minus B. It is equals to A square minus B square. Clear, I guess? Let us take the next question. So that is how I will keep on solving for the questions for you. So I have solved. So let's see the next question from the same year, 2023. Now this question would be of 3 marks, as I can see, because the MCQ was of 1 mark, and this question has to be of 3 mark. It was in the section A, I hope, and so it's a compulsory question to solve from the trigonometrical INTs. So you have to see that the INTs are basically of foremost use in these questions. But sine square theta plus tan square theta plus 1 and equal to 0. So what you should do is that you fix your approach first of all. आपको अपनी पहले अप्रोच क्लियर करनी चाहिए. आपको देखना चाहिए यहाँ पर कि कौन सी आइडेंटिटीज का मैं अप्लाई कर सकता हूँ या मैं कहाँ से
कोई आइडेंटिटी का लिंक मिल रहा है और मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूं यहां पर। आई कैन सी sin square minus 1, but identity is 1 minus sin square theta. Always feel free to take out minus sign common from there. So I take out minus sign common, 1 minus sin square theta into 1 plus tan square theta plus 1 minus cos square theta into sec square theta. Now cos square is minus 1 plus 1 gets me equal to 0. That's a very simple question. You can always solve question in this manner. So you see that what I again emphasize on, these questions are of the first step, this is second step, and this is third step. The first step is the answer. So if this is a 3-mark question, so board will give you a mark on each step. So you got first mark, second mark, and third mark in this question. So don't think board does not do step marking. Step marking is very well done in the board examinations. When we correct the copies, when I correct the copies of board exams, we always take care into it that we should give marks in the manner of steps. So you have done the first step, you got a question. So please understand, आपको क्वेश्चन कभी भी पूरा नहीं छोड़ना होता है। आपको उसमें अगर एक स्टेप आता है, एक स्टेप लिख कर आइए। आपको 2 स्टेप आ रहे हैं, 2 स्टेप लिख के आइए। You keep on scoring for everything you do in the copy. Every word written in the copy gives you marks. Right. Anyway, we move on from there to the next question. And the question is from year 2022. Prove that 1 plus 1 tan square theta upon 1 plus sec theta. So what is tan square theta can be equal to? I hope you all know the idea. Sec square minus tan square equal to 1. So tan square theta equals to sec square theta minus 1. The denominator remains as it is a square minus b square and it goes off from here. I got 1 plus sec theta minus 1. This gives me the answer as sec theta. Such as a basic question. Again, you see here, again I mark the steps for you for understanding. So this is the question, and so I got 1 mark for this. The example check the second question. Okay, it is correct. So he adds up 1 mark for this step. The third step is this, and you got 3 marks for the entire question. That is how the marking is done in the board exam. It is easy to score in the board exam. Be sure about it. आपको हमेशा अपने स्टेप्स को करते जाना है. क्वेश्चन को कभी भी पूरा नहीं छोड़ना है. मेरी बात को ध्यान रखिएगा बच्चों. आपको हमेशा हेल्प करेगा ये अप्रोच. जितना आता है करके आइए. छोड़िए मत कोई भी क्वेश्चन. So this was the year 2022. Let us move on the next question, and that is from the year. One more question from 2022. One question must be in the section A and the other in section B. Now this might be again a 3-mark question. So let us see the question. 1 plus sine theta whole square 1 minus sine theta whole square upon 2 cos square theta. 1 plus sine theta whole square plus 1 minus sine theta whole square upon 2 cos square theta. What you can see in the numerator, it is a plus b whole square plus a minus b whole square. The a plus b whole square plus a minus b whole square is an algebraic identity. I have solved it for you separately. A plus b whole square plus a minus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. A square plus b square minus 2ab cancel.
It is twice of a square plus b square. Now same identity को यहाँ apply करिए. This we got 1 plus sine square theta upon 2 cos square theta. 2 plus 2 sine square theta upon twice of cos square theta. Take out 2 common in numerator. 1 plus sine square theta upon 2 and 2 cancel कर दीजिए. Now when you got a binomial term in numerator and a single term in denominator, split the fraction. हम बोलते हैं इसको split कर दीजिए. तो split कर दीजिए 1 upon cos square plus sine square upon cos square. इसको split करना बोलते हैं. I got the answer as sec square plus tan square theta. It's a very easy question. अगर आप ये INT ढंग से लगा पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी है. क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. It is a good question. It might be a 4-mark question also for board exams, but I think generally it is a 3-mark question. The first step, the second step, and the third step, and you get the answer again. So, what I suggest you is that उन questions को solve करिए जो questions 3 steps या 4 steps में हो रहे हैं. Do not go for 1-page solutions or 10-step solution. It will not be asked in the board exam. As I have been teaching these classes for a long time, more than 20 years, 24 years. I've never seen board paper which is having a huge number of bigger questions, lengthy answers. It is not that. Board is going to check your basic concept of the topics. आपने वो बेसिक पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, आपने वो बेसिक प्रिपरेशन भी कर रखी है कि नहीं कर रखी है. बोर्ड सिर्फ यही चेक करता है. It does not check more than that. I've got to the next question. So next question is 1 upon 1 plus sin theta plus 1 upon 1 minus sin theta. Denominator में sin के single terms हैं, ऊपर केवल 1 और 1 है. We cannot change sin into anything else. एक ही रास्ता बचता है LCM लेने का. 1 upon 1 plus sin theta 1 upon 1 minus sin theta equals to 2 sec square theta this is cancelled and you got 2 sec square theta. What can be easier than this? आप बताइए, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? बोर्ड को इससे इजी क्या देगा? पर जिसने पढ़ाई ही नहीं करी है वो इसे भी सॉल्व नहीं कर पाएगा. सो अल्टीमेटली एक साल के अंदर आपको एक कंसाइज बुक सॉल्व करनी है, उसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है और PYQs करने हैं. मैथ्स के एग्जाम के लिए इतना ही चाहिए. अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ाई करता है तो वो साथ साथ में आगे आने वाले सालों की पढ़ाई भी ढंग से कर सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप कितना अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर. सो व्हाट आई फील इज दैट बोर्ड डज नॉट आस्क यू टू स्टडी 20 hours a day, स्टडी स्मार्टली, स्टडी कंसिस्टेंटली. पूरे साल में कंसिस्टेंट पढ़ाई करिए, वो ज्यादा जरूरी है. बजाय आप 20 घंटे बैठे हैं कॉपीज लेकर और पढ़ाई तो कुछ भी नहीं कर रहे. सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आप बुक्स लेके बैठे हुए हैं, आपका मुंह कहीं और लगा हुआ है, आप फोन चला रहे हैं, आप यू डूइंग एनीथिंग बट नॉट स्टडी. दैट इज ऑफ नो पर्पस. बुक्स को ओपन करिए, फोकस करिए, 4 घंटे पढ़िए, कंस्ट्रक्टिव पढ़िए, ध्यान लगाकर फोकस देकर पढ़िए. I'm going to compare 2020. So now here this question is slightly bigger. You see cot A and tan A. So I am writing the question sine upon 1 plus cos A upon sine A, cos A upon
sin A upon cos A. LCM लीजिए, sin A upon this becomes sin square A upon sin A plus cos A cos square A upon sin A plus cos A. So डिनोमिनेटर में sin A plus cos A sin A plus cos A आ गया. आप कम से कम आप ऑलरेडी 3 स्टेप्स कर चुके हैं. 4 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए. आपके पास डिनोमिनेटर में सेम एलसीएम आ गया है. आपने एक बार और एलसीएम लिया और लिखा sin A plus cos A, तो ऊपर कितना आ गया sin square A plus cos square A 1 upon sin A plus cos A. पर आंसर तो अभी भी नहीं आया है. I still don't have answer with me. I need the answer as 1 upon sin A plus cos A. और आंसर कितना आ रहा है sin minus cos A. What should I do now? I should rationalize this question. I should multiply it by sin A minus cos A upon sin A minus cos A. This might gives me the value of sin A minus cos A in numerator and sin square A minus plus cos square A in denominator. That becomes sin A minus cos A upon 1, and that is the answer I require in this question. Now let me change this question and solve once again. I have done some mistake in the question.
let us solve the question of year 2020. Now, this question is slightly bigger steps as we have done earlier. What the steps are? The steps are that let us solve the question of year 2020. A slightly bigger question. Slightly one more step I can see. We got the value of cot and tan in the question. It increased step by 2 steps further. Now the 2 steps are, we got cot and tan in here. So when I write down where I got cot in my question, it gives me minus cosine upon so if you take LCM here, so this way gives you sine square upon sine plus cosine minus cos square upon sine plus cosine. Denominator is same. There is no issue with denominator. What you should do? Simply take LCM once again. Sine square A minus cos square A. This is A square minus B square. So that gives me sine A plus cos A. Sine A minus cos A upon sine A plus cos A is cancelled. Your answer is sine A minus cos A. A very simple, easy question. So what do I have in the pattern in the questions of board exam? Sine और cos के आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एलसीएम देने के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में चेंज करने के क्वेश्चंस आ रहे हैं. आइडेंटिटीज लगाइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस ही जनरली आ रहे हैं. अगर साइन और कॉस आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन में चेंज करना है और कुछ नया नहीं करना है. सिर्फ tan और cot को sin अपॉन cos एंड cos अपॉन sin में चेंज करना है. फिर से मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम निकालिए और सिंपलीफाई कर लीजिए. दैट इज ओनली thing you need to do in these questions. Let me move on to the other question. I'm in the year 2020. I will solve the 5 years PYQs. Already solved the 3 years question. 1 minus tan upon 1 minus cot. So 1 minus tan is 1 minus sin upon cos upon 1 minus. Now this becomes cos minus sin upon cos upon sin minus cos upon sin. I solve it further. Multiplied by sin upon sin minus cos. The square is going on around on this everywhere still. Now what's the purpose of square in this question? In fact, so you see I have got square here also attached on the question. Square क्या हेल्प करने के लिए लगा रखा है? क्या सिर्फ tan स्क्वायर लाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं. इट्स वेरी केयरफुली हियर. ये cos माइनस sin है, ये sin माइनस cos है, ये a माइनस b है और b माइनस a है. a माइनस बी जो होता है वो माइनस ऑफ b माइनस ए के इक्वल होता है. मतलब कि अगर मैं b माइनस ए माइनस कॉमन निकालूंगा तो वो माइनस ऑफ a माइनस b बन जाएगा. So what should I do here is that I should write down minus of sin theta minus cos theta upon sin minus cos into sin upon cos. Now square has not gone anywhere. This is cancelled and this becomes tan theta with the whole square. You got the answer. Plus tan square theta. A good question.
आपको स्क्वायर का पर्पस समझना चाहिए, राइट अवे स्क्वायर्स नहीं खोल देना चाहिए। न्यूमरेटर का स्क्वायर खोल दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर खोल दिया। टैन और कॉट को देखते ही जो पहला स्टेप मन में लेके आइए वो ये रहे कि क्या मैं इनको चेंज कर सकता हूं साइन अपॉन कॉस एंड कॉस अपॉन साइन में। I hope the question is clear to you all. Please note these questions in a notebook and keep practicing again and again. And on the fourth year from this year, cosec minus sine. So I write down 1 upon sine minus sine theta, 1 upon cos minus cos theta, and here sine upon cos plus cos upon sine. 1 minus sine square theta into upon sine theta, 1 minus cos square theta into cos theta, sine square theta plus cos square theta into sine theta cos theta. This cos square theta upon sine theta, sine square theta upon cos theta, 1 upon sin theta cos theta. आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में दो साइन है, दो कॉस हैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर नीचे भी आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर भी आ गया। यू हैव साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर upon sine square cos square. This gives you 1 as the answer. I hope you understand the question, everyone. I'm moving on to the next question. I'm on activity 90. I'll solve one more question from year 2018. Now 2018 had given us a very different question from all the questions. Surprise was the question. क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा नया स्टेप लगाया गया था, जनरली प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। सो यू सी व्हाट आई हैव गॉट हियर, आई हैव गॉट sec square theta plus cosec square theta. So I need to have tan plus cot in my answer. तो मुझको ये मालूम है कि sec square 1 plus tan square होता है। अगर मुझको मालूम है, आई होप सब बच्चों को मालूम होगा। और cosec स्क्वायर कितना होता बताइए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पर सब लोगों को भाई कि हम आइडेंटिटीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या लगाया बच्चों, sec स्क्वायर लगाया, 1 प्लस बताओ कितना आया tan स्क्वायर, और cosec स्क्वायर कितना आया 1 प्लस cot स्क्वायर। मैंने यहाँ पर इसको ग्रुप कर लिया, tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2 को लिखा हमने tan थीटा cot थीटा। क्यों लिखा, क्यों किया हमने ऐसा? हमने 2 को नहीं लिखा, ये 2 into 1 था, 1 plus 1 2 आया था, 2 into 1 था। और tan और cot इसलिए क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। tan और cot का मल्टीप्लिकेशन 1 देगा, जैसे कि sin और cosec का मल्टीप्लिकेशन 1 देगा, जैसे कि sec और cos का मल्टीप्लिकेशन 1 देगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा tan into cot, ये क्या बन गया, ये बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर रूट, आई गॉट द आंसर tan theta plus cot theta. Simple, usual question it is. Nothing to be worried about. That is how we do these questions. So you see again, these are very simple and easy question. I've got the answer in 3 steps again. Board are giving you 3 marks question for 3 steps. 1 mark का 1 step. 1 step का 1 mark. I hope I am clear about this question. You want me to solve one more question? Okay, one more question I will solve. I will take up for the year 2018. 1 plus cot minus cosec, 1 plus tan plus sec. Slightly bigger question. 1 plus cos upon sine minus 1 upon sine ऐसे लेते हैं
sin theta plus cos theta minus 1 upon sin theta cos theta plus sin theta plus 1 upon cos theta. Now at this junction, at this step of the question, you need to be very careful. और ये जो स्टेप है ये बड़ा एक यूनिक स्टेप है यहाँ पर, और ये जिन बच्चों ने बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, चीज़ों को समझा है, चीज़ों को वक्त दिया है, उनकी इंपॉर्टेंस को लेकर चले हैं, वही कर सकते थे। यहाँ पर ये स्टेप बन रहा है sin प्लस कॉस माइनस 1 एंड sin प्लस कॉस प्लस 1। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आई विल बी हैविंग sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा minus 1 upon sin theta cos theta. This is 1 again, and this 1 is taken out with this remaining 1 in minus sign. क्या बच गया हमारे पास बताइए? 2 sin theta cos theta upon sin theta cos theta. क्या आपको आंसर 1 दिखाई पड़ रहा है? आंसर 2 दिखाई पड़ रहा है, मुझे आंसर 2 मिल गया है। एक 4 मार्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 मार्क में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ सकता है। फोकस करिए इस क्वेश्चन के ऊपर, स्टेप्स को प्रॉपरली समझिए एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। मैं आपको एक फाइनल क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको मैथ्स पिछले 5-6 सालों के पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, उतने ही काफी होते हैं पैटर्न को समझने के लिए। I've got sin theta common 1 minus 2 sin square theta, cos theta common 2 cos square theta minus 1। ये tan theta हो गया और ये कितना हो गया? ये हो गया 1 minus twice of 1 minus cos square theta। So ये हो गया tan theta 1 minus 2 plus 2 cos square 2 cos square theta minus 1. It is 2 cos square theta minus 1 upon 2 cos square theta minus 1. So ultimately I have got tan theta into 2 cos square theta minus 1 cancel tan theta is answer. You have a very easy and simple question to solve out. That is how you solve this question. So 2017 also was a very easy question. Trigonometry question generally बहुत difficult नहीं आ रहे हैं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन और सॉल्व करता हूँ आपको, ये 2017 का हमने पिछले 6 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एंड दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इजियर पार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री का, साइन स्क्वायर 90 माइनस 62 प्लस साइन स्क्वायर 62 प्लस tan स्क्वायर 90 माइनस 52 माइनस कॉट स्क्वायर 52 प्लस 1/4 sec 30 की वैल्यू रख बोलिए, sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल cos 30 √3/2 sec 30 2/√3 2/√3 का स्क्वायर 4/3, right? It becomes cos square 62 plus sin square 62 cot square 52 minus cot square 52 plus 1/3। ये 1 हो गया, ये कैंसिल, 1 plus 1/3, the answer is 4/3। With this I am ending this video। आप सोल्व द PYQs of all these years 20 से लेकर 17 तक, एक बार इनको दोबारा करिए, एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए,
take more questions. I'll try to put the assignment of trigonometry in the description box of my video. Please subscribe my channel to get the videos on the preparation for 2024 board questions of ICSE. To prepare properly for the maths exam of year 2024. This is what you need to do. अपने आप को कंसिस्टेंट अप्लाई करिए, फोकस करिए पढ़ाई के ऊपर, फोकस को डेविएट मत होने दीजिए, उन फ्रेंड्स को ही अपने आसपास रखिए जो खुद इंटरेस्टेड हों और आपको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो. Do not be into those people who are not leading you towards the academics. My suggestions for you: focus yourself. You got still 5 to 6 months left for the board exam. September is almost over. October, November, December, January, February. The 5 months are left. These 5 months includes lot of festivals. But आपको इन सब में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना है. आपका जो पहली प्रायोरिटी है, आपकी जो पहली इसमें ज़रूरत है, वो है आपके बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बिल्कुल सीरियस रहिए. बोर्ड एग्जाम्स की तरफ अपने आप को फोकस करते रहिए. जितना ज़्यादा आप अभी पढ़ाई कर लेंगे, आपको उन दिनों में कंफर्ट मिलेगा. आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पूरे साल फोकस नहीं करते हैं, एंड द डे ऑफ एग्जाम दे रिपेंट कि अगर हम थोड़ी पढ़ाई और कर लेते तो हमारे मार्क्स परफेक्टली बढ़ जाते. सो राइट नाउ इज द मोमेंट, राइट नाउ इज द चांस. फोकस योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, stay happy, enjoy studies, enjoy the boards, enjoy the goals. See you again in my next video. I will be starting a next unit. I will post a next video for the PYQs of heights and distance. Till then, goodbye. See you.